Hello students, good morning. Welcome to the next video of coordinate geometry class. Today we will discuss angle between two lines and what is the condition for the three lines are concurrent and some problem. Last class we discussed about what is the general equation of the line and how to convert the general equation of line into different form. So before starting, first we start Brahmanath. Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. So, first we discuss angle between two lines. Angle between two lines. You know, angle between two lines of two non-vertical lines having slope m1 and m2 is theta equal to tan inverse m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2. Condition for two lines are perpendicular, m1 into m2 equal to minus 1, and condition for two lines are parallel, m1 equal to m2. But in a general form, how to find the angle between two lines in term of a, b, c. Okay. First we take two equations of the line. Let us consider two equations of lines, two equations of line, two equations of lines, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So what is the slope of the first line? Slope of the first line, that is m1 equal to minus a1 by b1. m2 is the slope of the second line equal to minus a2 by b2. You know theta equal to angle between these two lines tan inverse mod of m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2, which is equal to tan inverse of m2. What is m2? So m2 is minus a2 by b2 minus of m1. m1 means minus a1 by b1. So minus minus plus a1 by b1 whole by 1 plus m1. So minus a1 by b1 into m2 minus a2 by b2, which is equal to tan inverse. Okay. So a1 b2 minus a2 b1 by b1 b2 divided by, yes, your b1 b2 minus plus a1 a2 by b1 b2. Okay. So b1 b1 cancel. Therefore angle between two lines, that is theta equal to tan inverse a1 b2 modulus of a1 b2 minus a2 b1 by a1 a2 plus b1 b2, which is angle between two lines. Its equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is angle between two lines. Condition for parallel. So if two lines are parallel, then theta equal to 0. That means tan theta equal to 0. So tan theta 0 means a1 b2 minus a2 b1 by a1 a2 plus b1 b2 equal to 0. That implied a1 b2 minus a2 b1 equal to 0, which is a1 b2 minus a2 b1 equal to 0, a2 comma b1, that implied a1 by a2 equal to b1 by b2, which is condition for two lines are parallel. Condition for parallel. Next, condition for
perpendicular. So if two lines are perpendicular, then theta equal to 90. So theta 90 means tan 90. So tan 90 is infinite. So this expression is infinite. That implied a1 b2 minus a2 b1 by a1 a2 plus b1 b2 equal to infinite, and this expression is infinite means the denominator part is 0, that is a1 a2 plus b1 b2 equal to 0, and which is the condition for two lines are perpendicular, and this is the condition for two lines are parallel. Okay. Next, condition for two lines are identical. Condition for two lines are identical. Okay. Next, condition for two lines are identical or coincide, or they are represent the same line. So two lines are identical means they have the same x-intercept and y-intercept. So both the x-intercept are same रहिबो हला. अच्छा, x-intercept of the first line, x-intercept of L1 and L2 are equal. X-intercept of the first line is minus C1 by A1. X-intercept of second line minus C2 by A2. Next, y-intercept of first line minus C2 by A2, constant term by x coefficient, and y-intercept of second line equal to minus C2 by B2. So two lines are identical means they have the same x-intercept and y-intercept, that is the minus C1 by A1 equal to minus C2 by A2, and minus y-intercept, this is B1 and also B2. So minus C2 by B1 minus C2 by the x-intercept है ना, तब same x-intercept. अच्छा, y-intercept first line y-intercept minus C1 by B1 और second line रो y-intercept होती minus C2 by B2. तो minus C1 by B1 equal to minus C2 by B2. तो here minus minus cancel, that implied C1 by C2 equal to A1 by A2. Here minus minus is also cancelled. C1 by C2 equal to B1 by B2. So C1 by C2 equal to A1 by A2 and C1 by C2 equal to B1 by B2. Therefore, A1 by B1 equal to A1 by A2. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. B1 by B2 equal to C1 by C2, which is the condition for two lines are identical or they are represent same line. Okay. This is the condition for two lines are parallel, condition for two lines are perpendicular, and condition for two lines are parallel. Next, what will be equals on the line parallel to the given line? Okay. Parallel to the given line. Suppose these two lines are parallel. So parallel means if A1 by A2 equal to B1 by B2, this is the condition for two lines are parallel. A1x plus B1y plus C1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0. If these two lines are parallel, then what will be its equation? You know, parallel means this is the condition A1 by A2 equal to B1 by B2. Suppose its ratio equal to 1 by k. So A2 equal to what? A1 by A2 equal to 1 by k. That means A2 equal to A1k
and b2 equal to b1k. Putting the value of a1 and a2 in the equation of the second line, a equation हम जदि पकेबा कौन हम a2 जगह अच्छा a2 जगह कौन होची a1k into x, b2 जगह b1k into y plus c2 equal to 0. So take it common k, so k टा common लेड होची a1x plus b1y plus c2 by k equal to 0. Okay, that implied a1x plus b1y plus c2 by k equal to 0, where k not equal to 0. Suppose we take c2 by k equal to, we take another constant a1x plus b1y plus c1 equal to 0. So this is the equation of the line, equation of the sorry c2 by k, or you can take another constant c2 by k equal to c2 by k equal to another constant, that is the d, capital D equal to 0. So the equation of the line parallel to the given line a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is a1x plus b1y plus d equal to 0. Okay, that means once a line is given equation ax plus by plus c equal to 0, so when the line which is parallel to the given line, okay, and this line must be this line are called the family of this line, and its equation is ax plus by plus constant term only change ax plus by plus d equal to 0, ax plus by plus d, or you can write another constant k. Okay, you know गोटे लाइन को पैरेलल करी गुड़ाए लाइन ड्र हो पारियो, तांकर इक्वेशन कौन हम ax plus by plus k, कांस्टेंट टर्मटा खाली चेंज करियो, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y चेंज हम ना कहीं पैरेलल मीन्स तांकर स्लोपटा कौन हम either proportional or identical same भी हम है ना. So equation of the line parallel to the given line is ax plus by plus k equal to 0. तो ए लाइन को जो लाइन परपेंडिकुलर हम तार इक्वेशन कौन हम, परपेंडिकुलर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1. सो यू हैव टू इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y. तेणु ये ए जगह तुम b लिख, ये b जगह ए लिख, साइन टा ये चेंज कर. सो इट्स इक्वेशन इज bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0. ए लाइन कौन हम आपको परपेंडिकुलर हम. ओके, सो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, equation of the line which is perpendicular to the given line ax plus by plus c equal to 0 is bx minus ay plus k equal to 0. है परपेंडिकुलर हम माने तुम कौन करियो x रो कोफिशिएंट y रो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करिवो. इंटरचेंज कला पर एडी कौन हम साइन टा चेंज हम, प्लस तेले माइनस हम, माइनस तेले प्लस हम कोडी y रो कोफिशिएंट रे, आ दीटा कोफिशिएंट इंटरचेंज करियो. पैरेलल मीन्स x रो कोफिशिएंट y रो कोफिशिएंट जहाँ थी सही रखियो, खाली कांस्टेंट टर्मटा चेंज करियो है ना. सो नाउ वी राइट दिस थिंग्स. फर्स्ट ला इक्वेशन ऑफ द लाइन नंबर 1 इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल to given line, parallel to the given line ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus k equal to 0. Number 2 equation of line perpendicular to given line ax plus by plus c equal to 0 is, you have to interchange the coefficient of x and y, bx minus ay, x रो कोफिशिएंट y रो कोफिशिएंट इंटरचेंज करियो, एडी माइनस रखिबो bx minus ay प्लस कांस्टेंट टर्म चेंज हम प्लस k equal to 0. नंबर 3
equation of line देखो if two lines are intersect, so in that point so many lines are drawn, गुड़ाए line draw हो पारियो ना नहीं, and their equation is first line plus k into second line. Equation of line passing through intersection of two lines. L1 is the first line, L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is L1 plus k into L2 equal to 0. L1 plus k into L2 equal to 0, that is A1x plus B1y plus C1 plus k into A2x plus B2y plus C2 equal to 0. तेणु दीटा लाइन रो इंटरसेक्शन देरी जो लाइन टा जीवो तार इक्वेशन होची फर्स्ट लाइन L1 plus k into L2 equal to 0, because this equation represent also first degree equation, and you know every first degree equation represent equation of the line. Okay, do you understand? तेणु गोटे लाइन थिबो से लाइन को पैरेलल करी देखो ये लाइन टा अछि, ए लाइन को पैरेलल करी आमे गुडाय लाइन ड्रा होई परियो. These are the family of the lines, and our equation होची parallel means यार slope all are equal. समस्त स्लोप डा कौन हम इक्वल हम ना नहीं, तेणु तार इक्वेशन होची ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0. तार गोटे लाइन थी से लाइन को जो लाइन परपेंडिकुलर हम तार इक्वेशन होची bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर माने यार स्लोप डा जहाँ हम ये आर स्लोप डा कौन तार रेसिप्रोकल अपोजिट साइन आर स्लोप डा कौन होची माइनस a बाय b, तो आर स्लोप डा कौन हम b बाय a, तो रेसिप्रोकल अपोजिट साइन होची ना नहीं. दीटा लाइन रो इंटरसेक्शन देगी गुड़ाए लाइन जो ड्रा हो पारे तार इक्वेशन होची फर्स्ट लाइन प्लस k into second line. Okay, so using this concept we do some problems. Number 1, find the acute angle between the lines y plus 2 equal to 0 and root 3x plus y minus 1 equal to 0. So you can apply by slope method formula tan inverse m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 रो mode, or you can apply by formula tan inverse a1 b2 minus a2 b1 by a1 a2 plus b1 b2 रो mode. Okay, you can apply any one method. Answer 1 एटा में a1 b2 रा अप्लाई करिया. देखो y plus 2 फर्स्ट लाइन अछि L1 होची रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन y plus 2 equal to 0 and L2 second line root 3x plus y minus 1 equal to 0. Here a1 equal to देखो किछ नहीं means 0 into x अच्छी, तो a1 हो 0, b1 means the coefficient of y which equal to 1, c1 होचे 2 है ना, a2 the coefficient of x in the second line root 3, b2 1 and c2 equal to minus 1. So angle होची theta equal to tan inverse modulus of a1 b2 minus a2 b1 by a1 a2 plus b1 b2. Okay, which is equal to tan inverse a1 b2. Well, a1 b2 means a1 b2 0 into 1, तो 0 into 1 minus a2 b1 root 3 into b1. Root 3 into b1 means 1 by a1 a2 0 into root 3 plus b1 b2 1 into 1. So tan inverse minus root 3 by 1 alla. So acute angle means you have to take angle must be less than 90 degree. So tan inverse root 3 minus root 3 to mode, so root 3. So tan inverse root 3 means you know 60 degree. Okay, so 60 degree. So the angle between two lines is 60 degree. Okay, angle pacharthile you will get 60 degree and the other is on 180 minus 60. Next, number 2, equation the line passing through the point 2, 3 and parallel to the line.
तो parallel means their slopes are equal, or by using this method you know the equation of the line parallel to the given line. Ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus k equal to 0. Here given equation of the line, equation of line x plus y minus 9 equal to 0, equation of parallel to the given line, equation of line parallel to given line is x plus y plus k equal to 0. Since it passes through 4 comma minus 3, sorry, it passes through 2 comma 3, so extra जगह में 2 पके दियो, 2 plus 3 plus k equal to 0, that implied k equal to minus 5. Therefore equation of required line, required line is x plus y, k means minus 5. So x plus y minus 5 equal to 0. Or you can take another way also. देखो ए लाइन को पैरेलल हो तो माने ए लाइन रो स्लोप जहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन रो स्लोप दा हो, ए लाइन रो स्लोप कौन माइनस ए बाई बी, तो ए डाउची 1, बी डाउची 1, तो यार स्लोप होची 1, सॉरी माइनस 1 है, गिवन लाइन रो स्लोप भी कौन हम माइनस 1 हम, सो एमडा माइनस 1 हम, ए पॉइंट देरी पास करची मीन्स दिस इज द x1 and y1. You know the equation of the line passing through x1 y1 having slope m 1.4, that is y minus y1 equal to m into x minus x1, m दिबी कर परियो, y minus y1 3 equal to m डाउची minus 1 हम into x minus x1 minus 2, m दिबी कर परियो, तो y minus 3 equal to minus x, या से plus 2, एटा अब y plus x plus 5 equal to 5 होगा नहीं, minus 3 अच्छे से plus 5 plus 3, तो x plus y equal to 5. So m दी यूज कर ले भी हम, और you can apply this method. Next answer कौन को ची, थर्ड नंबर आंसर टा देखो, आंसर 3, equation of line passing through the point 4 comma minus 3 and perpendicular to the line. Answer 3, equation of line perpendicular to 3x minus 11y plus 4 equal to 0 is, you can interchange the coefficient of x and y, है, एटा इंटरचेंज हम, तो 11x एटा माइनस अच्छी प्लस हम प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, ये इंटरचेंज हम, एटा माइनस टा प्लस हम ना नहीं, तो 11x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0. Since it passes through 4 comma minus 3, that means this point must be satisfied the given equation. तो 11 into 4 plus 3 into minus 3 plus k equal to 0, तो 44 minus 9 plus 5 k equal to 0, तो 44 minus 9 that is 35, तो 35 plus k equal to 0, that implied k equal to minus 35. Therefore the equation of the perpendicular line is 11x plus 3y, okay, that is 11x plus 3y, k means minus 35, so minus 35 equal to 0. Or you can take another way also, देखो आपको परपेंडिकुलर होची मीन्स यार स्लोप ला फास्ट बाहर करियो, यार स्लोप ला कौन कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज द 3/11 होला, तो आपको जे परपेंडिकुलर होची तार स्लोप ला कौन हो 11/3, रेसिप्रोकल ऑपोजिट साइन नबो ना नहीं, तो -11/3, तो एम टा होची -11/3, और ए पॉइंट रे पास करछि एटा होची x1 एंड y1, so the equation of the line is y minus y1 equal to
m into x minus x1. Okay. So you can apply direct method or by using this method. Next, how to find the point of intersection of two lines. So point of intersection, if two lines are intersect, to find the point of intersection means by equating these two equations or by solving these two equations you will get the point of intersection. You know, दुईटा लाइन इक्वेशन थी इन जनरल फॉर्म थी तार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आम एदर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नहीं करें और बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और बाय सब्ट्रैक्शन मेथड भी करहब ना. नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Condition for concurrent of three lines. So three lines are said to be concurrent, means the point of intersection of any two line must be satisfied the equation of a third line. Okay. So three lines are concurrent means point of intersection of any two line must be satisfied another line. First we take three lines. Let L1 A1x plus B1y plus C1 equal to 0, L2 A2x plus B2y plus C2 equal to 0, L3 A3x plus B3y plus C3 equal to 0 are three lines. So these three lines are said to be concurrent if three lines are concurrent means point of intersection of any two line must be satisfied another line. Point of intersection of any two line must be satisfied the equation of other line. Okay. So now to find the condition for concurrent, first we have to find the point of intersection of second and third line. Point of intersection of L2 and L3. So how can you find the point of intersection? By solving L2 and L3 by equating method or by substitution method or by cross multiplication method. तेणु तुम दुईटा इक्वेशन जमी भी सल्व कर ना नहीं आम ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नहीं करवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड देख. सो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0. तेणु इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कल हम और सब्स्टिट्यूट गोटे वैल्यू बाहर कर एक्स वैल्यू बाहर कर पकेले भी हो पार. इन अदर वे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड. तो फास्ट हियर वी फाइंड क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड. तो x बाई B2C3 माइनस B3C2 इक्वल टू y बाई C2A3 माइनस A2C3 इक्वल टू 1 बाई A2B3 minus A3B2. That implied x equal to what? B2C3 minus B3C2 by A2B3 minus A3B2, comma y equal to C2A3 minus A2C3 by A2B3 minus A3B2. So putting the value of x and y in equation of first line, putting this value
putting the value of x and y in L1 in first line, and first line that is first line आम सब्स्टिट्यूट करिया भैल्यूटा. So that implied a1 into x means b2c3 minus b3c2 by a2b3 minus a3b2 plus b1 into c2a3 minus a2c3 by a2b3 minus a3b2 plus c1 into plus c1 equal to 0. That implied, to take it LCM. So LCM is a2b3 minus a3b2, तो a1 into b2c3 minus b3c2 plus b1 into c2a3 minus a2c3 plus c1 into a2b3 minus a3b2 equal to 0. That implied a1 into b2c3 minus b3c2 plus b1 into c2a3 minus a2c3 plus c1 into a2b3 minus a3b2 equal to 0. Okay. So this is the condition for three lines are concurrent. So this value, this expression can be represented in the determinant form. Okay. So its determinant form is its determinant form. देखो ये जो एक्सप्रेशन आइला ए एक्सप्रेशन भैल्यूटा 0 हेले आम तीन टा लाइन कनकरेंट कहवा, किंतु ए एक्सप्रेशन भैल्यूटा को आम एमती मन न रखिकी आपको आम डिटरमिनेट फॉर्म रखा. सो डिटरमिनेट इज फर्स्ट यू हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड द कांस्टेंट टर्म इन द फर्स्ट टू a1 b1 c1. सेकेंड लाइन रो कोएफिशिएंट लिख x y रो a2 b2 c2. थर्ड लाइन रो कोएफिशिएंट लिख दियो a3 b3 c3. Okay, and its value equal to 0. If we expand this determinant, we will get this one. Why? देखो in determinant can be expand plus minus plus तो मेरा नबो तो a1 into first row first column leave out तो b2 c3 minus b3 c2 minus b1 into एटा गला ना नहीं a2 c3 minus a3 c2 किंतु कौन एटी c2 a3 minus a2 c3 अच्छी तो माइनस टी कमन जो यहाँ माइनस कमन ने बोले एक्सप्रेशन आसो ना कि माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 है कहीं माइनस टी कमन कले ए भैल्यू सागे सामान हम. सो प्लस c1 इंटू फास्ट थर्ड कलम जो a2 b3 माइनस a3 b2 तेणु एड भैल्यू जहाँ एड भैल्यू भी सेम. तो ए आंसरटा को आम इजिली मन रखापी एटा को डिटरमिनेटर आम एक्सप्रेशन करिया. सो दिस इज द कंडीशन फॉर थ्री लाइन्स आर कनकरेंट बाय हेल्प ऑफ डिटरमिनेट फॉर्म. ओके, और यू कैन अप्लाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन. तेणु सेकेंड आ थर्ड लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करियो. से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब फर्स्ट लाइन इक्वेशन को सैटिस्फाई हम देन वी से दिस थ्री लाइन्स आर concurrent. Or you can apply in the determinate form. So the here determinant of value 0 hochi, then we say three lines are concurrent. Do you understand? Now one question. So that the line passing through 6, 0 and minus 2, 4 is concurrent with the line 2x minus 3y minus 11 equal to 0 and 3x minus 4y minus 16 equal to 0 है.
So first you have to find equation of the line passing through these 2 points. Means first you have to find the slope. The slope of line passing through 6 0 and -2 comma -4 is okay y2 minus y1 -4 -0 by y2 minus y1 by x2 minus x1. So -2 minus 6 which is equal to -4 by -8 and which is 1 by 2. So slope is 1 by 2. So equation of the line, equation of line is y minus y1, take it x1 y1 and this is x2 y2. So y minus y1 0 equal to m. M means 1 by 2 into x minus x1, x minus 0. Use the 2-point formula, y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. That implied 2y equal to, that is 2y equal to x minus 6 and that is x minus y, which is x minus 2y minus 6 equal to 0. X minus 2y minus 6 equal to 0. So 3 lines here, L1 equal to, first you take this one, x minus 2y minus 6 equal to 0, and L2 2x minus 3y minus 11 equal to 0, L3 3x minus 4y minus 16 equal to 0. So 3 lines are concurrent, means you can apply in determinant form, or point of intersection of any 2 line must be satisfied the third line. So second or third point of intersection बाहर कर दियो. Point of intersection of L2 and L3 जो दिन ने भी हम ना नहीं. So L2 L3 आम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करिया गले इक्वटिंग कोएफिशिएंट करि पारियो. एडी 2x अछि 3x अछि, एडी 3 मल्टीप्लाई करियो, एडी 2 मल्टीप्लाई करियो हे पारियो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दियो. तो x बाई एडा गला -3 इंटू -16 48 -4 इंटू -11 44. ओके, तो -44 है -44. ओके, सो y बाई एटा उल्टा मल्टीप्लिकेशन हम -11 इंटू 3 -33 -11 इंटू -3 -33 है 2 इंटू -16 ना प्लस हम तो 32. 1 बाई एटा गला 2 इंटू -4 -8 -3 इंटू -3 -9 है तो +9. ओके, सो एटा 1 बाई 9 -8 के तो 1 हो. That implied x by 4 equal to y by -1 equal to 1. That implied x equal to 4 and y equal to -1. So the point of intersection of L2 and L3 is 4, 1. Point of intersection है 4, 1. Point of intersection 4, -1. So putting the value of x and y in first line, putting the value of x and y in L1 in first line, that is x रे कौन पड़ो 4 minus 2 into -1 2 into -1 ये आसो -6 ये कौन कहते 4 माइनस ये कौन अच्छे -1 -2 into -1 +2 तो 4 + 2 -6 6 -6 equal to 0, which is satisfied. Therefore L1 L2 and L3 are concurrent और भाई इन डिटरमिनेंट फॉर्म कौन करियो डिटरमिनेंट फॉर्म लिखले एटा को डिटरमिनेंट नबो फर्स्ट रो रे 1 -2 -6 रखियो, सेकंड रो 2 -3 -11 रखियो,
थर्ड रो 3 -4 -16 रखियो यार वैल्यूला बाहर करियो जदि ए वैल्यूला डिटरमिनेंट वैल्यूला 0 होची देन 3 लाइन्स आर कनकरेंट ओके नेक्स्ट वी विल डू अनदर क्वेश्चंस that is find the value of k where these 3 lines are concurrent. You know concurrent means a point of intersection of 2 line must be satisfied the other line. तेणु फास्ट दिरा लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर कर सेकेंड लाइन पकई पार कहीं आदि के वैल्यू बाहर करा नहीं कि सो और यू कैन अप्लाई इन ए डिटरमिनेट फॉर्म देखो ये आम डिटरमिनेट फॉर्म बाहर कर अप्लाई करवा यहाँ हूँ फास्ट लाइन L1 हूँ x - 2y + 1 = 0 L2 2x - 5y + 3 = 0 then L3 5x - 4y plus k = 0. So 3 lines are concurrent means determinant must be 0. So 1 - 2 1 2 - 5 3 5 - 4 k = 0. You take this expression first row रे x y रो coefficient नब constant term सिंधे 2 - 5 3 थर्ड रो रे 5 - 4 k ताको एक्सपांड कर दियो प्लस माइनस प्लस ओके दैट इम्प्लाइड 1 × -5 × k -5k प्लस 12 एटा माइनस माइनस प्लस 2 × k 2k -15 प्लस 1 × फास्ट रो आ थर्ड कॉलम जीव 2 × -4 के -8 प्लस 25 = 0 तो -5k प्लस 12 एटा हूँ 4k -30 है ये हूँ 25 - 8 + 17 = 0 तो -5k प्लस 4k -k एटा 12 प्लस 17 29 ओके तो 29 - 30 -1 = 0 दैट इम्प्लाइड k = -1 तो -k = 1 और k = -1 okay so in this way you have to find value of k for using concurrent condition. Next we will do another question देखो तो find the distance of the point 2, 3 from the line x + y + 1 = 0 measured parallel to the line 2x - y + 7 = 0 है ना तो ए पॉइंट रु ए लाइन प्रति आम डिस्टेंस बाहर करिया जो डिस्टेंसटा कि ए लाइन संगे कौन हम पैरेलल हम डू यू अंडरस्टैंड देखो यहाँ हूँ पॉइंटा सपोज पी पॉइंट 2, 3 एंड दिस इज द लाइन x + y + 1 = 0 तो ए पॉइंट टू ए लाइन प्रति डिस्टेंस बाहर करिया this distance must be parallel to this line suppose this is a line in this way है ए लाइन एमती अच्छी भाव तो लाइन इक्वेशन अच्छी 2x - y + 7 = 0 तेणु ए लाइन जमती अच्छी ए पॉइंट टू ए लाइन प्रति आम डिस्टेंस बाहर करिया दिस डिस्टेंस मस्ट बी parallel to this line. So what we do first we draw this line passing through the point P and parallel to this line intersect to that line. ए पॉइंट टू ए लाइन आड़ को लाइन ड्र कर जो लाइनटा या संगे पैरेलल हम है पैरेलल है ना सपोज ए लाइन एमती अच्छी भाव है कि अच्छा तो लाइनटा ड्र कलापर ये जो गिवन लाइन जो पॉइंटा इंटरसेक्ट कर दैट इज क्यू सो क्यू इज द point of intersection of this line and this line. So we have to find the distance from P to Q. After find the point Q, then you apply the distance formula 2 point distance formula है distance formula use करी तुम P Q रो distance बाहर करियो तेणु P फास्ट Q पॉइंट बाहर करिया पड़ियो Q पॉइंट बाहर करिया गले ए लाइन को सॉल्व करिया पड़ियो तो सॉल्व करिया गले ए लाइन रो इक्वेशन हमु जाना नहीं ना तेणु ए लाइन रो इक्वेशन बाहर करिया पड़ियो तो लाइन इक्वेशन बाहर करिया गले 1 पॉइंट गोटे दरकार आ स्लोप दरकार सिंस दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ 2x - y + 7 = 0
and you know the slope is यार स्लोप केते हम माइनस ए बाई बी बिकज दिस द जनरल फॉर्म तो आर स्लोप के माइनस ए बाई बी ए हूँ 2 बी हूँ -1 तो माइनस ए मीन्स 2 बी मीन्स -1 which is equal to 2 जेहेतु यार स्लोप 2 है ए लाइन आपको जेहेतु पैरेलल हो यार स्लोप भी 2 हम तेणु स्लोप 2 आउ ए पॉइंट पास कर लाइन इक्वेशन आम बाहर कर आंसर स्लोप ऑफ line slope of line 2x minus y plus 7 equal to 0 is 2 minus a by b minus a means 2 b means -1 equal to 2 since pq parallel to 2x minus y plus 7 equal to 0. So, slope of PQ line is to equation of line PQ is y minus y1 y minus 3 equal to m into x minus x1 m means 2 into x minus 2. Okay, that is y minus 3 equal to 2x minus 4 that implied 2x minus y plus 3 minus 4 minus 1 equal to 0. Okay, next to find q point of intersection. So point of intersection for point of intersection that is a PQ and line point of intersection of 2x minus y minus 1 equal to 0 and x plus y plus 1 equal to 0 आपको सॉल्व कर दिया तो 2x है ना 2x minus y minus 1 equal to 0 तो x plus y plus 1 equal to 0 तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल यस तो 3x माइनस 1 नहीं ना -1 प्लस 1 भी अच्छे सो 3x इक्वल टू 0 3x -1 प्लस 1 0 दैट इम्प्लाइड x इक्वल टू 0 है तो एक्सट्रा 0 ले y डाउच हमरो सो 0 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइड y इक्वल टू -1 तो y equal to -1. So point of intersection. So point of intersection is 0, -1. Okay, extra 0 y डा -1 आछी ना तो q point आला point of intersection equal to 0, -1. That is q. So that is q equal to 0, -1. Then distance PQ. So distance PQ equal to root of x coordinate differential square 2 minus 0 square plus 3 minus or minus 1 3 plus 1 square. So 2 square 4 plus 4 square 16 root 20. So root 20 equal to 2 root 5. Okay, so the distance from this point P of 2, 3 to the line x plus y plus 1 equal to 0 measured parallel to this line is 2 root 5 है तेणु प्रथम PQ लाइन इक्वेशन बाहर करियो बाहर कला परे आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करियो इंटरसेक्शन बाहर कला परे डिस्टेंस बाहर करियो because the distance must be parallel to this given line here given. Then we do another question. Find the equation of a line passing through the point of intersection of the line y minus x minus 1 equal to 0 and 2x minus y plus 1 equal to 0 and perpendicular to the line. मतलब आम लाइन इक्वेशन बाहर करिया जो लाइन ए दुटा पॉइंट इंटरसेक्शन दे पास करियो ए दुटा पॉइंट इंटरसेक्शन दे पास करियो माने फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स. अच्छा आपको कौन करते परपेंडिकुलर आपको परपेंडिकुलर हेले यार स्लोपटा जहाँ हम
रिक्वायर्ड लाइन रो स्लोप रो कोन हबो गिवन लाइन रो स्लोप रो रेसिप्रोकल ऑपोजिट साइन हबो सो आर स्लोपटा केते -a/b -3/2 नहीं सो इक्वल्स फ्रॉम द परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कोन हबो 2/3 ए लाइन को जो लाइनटा परपेंडिकुलर हबो तार स्लोप कोन हबो 2/3 हबो आ ए पॉइंट देर पास करछे तो वन पॉइंट फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म यू कैन अप्लाई y - y1 = m * x - x1 तेणु प्रथमे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करवा यार स्लोपटा जेहेतु -3/2 परपेंडिकुलर लाइन स्लोपटा कौन हम 2/3 एमटा पलैला पॉइंटा पलैला स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज कर और another way you can also know that the equals of the line passing through two lines L1 = 0 and L2 = 0 is L1 plus K into L2 = 0 and this line is perpendicular to that. Perpendicular means you have to apply the perpendicular condition a1 a2 plus b1 b2 = 0 तो सेमती कले भी हम एमती कले भी हो पार ना कि आम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करी इजी हो जल्दी हो आंसर फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन by cross multiplication method or by equating coefficient method okay or by cancellation method then we cancellation method रे यूज कर दियो एटा ला y - x - 1 = 0 तो इट इज -y plus 2x plus 1 = 0 हला y - x - 1 तो -y plus 2x plus 1 = 0 एटी प्लस कर दियो कैंसिल हो जियो plus 2x - x -1 plus 1 कैंसिल होगा तो एक्स्ट्रा 0 होगा एक्स्ट्रा 0 ले y - x - 1 = 0 तो y - 0 - 1 = 0 that is y = 1 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 0, 1 okay slope of line 3x plus 2y minus 10 = 0 is -a/b. Slope of perpendicular line is what 2/3 therefore equation of line perpendicular line okay so equation of required line since this required line passing through intersection of these two lines and perpendicular to this line so equation of required line is y - y1 = m * x - x1 so y - y1 this is x1 consider and this is y1 so y - y1 = 1 into m m means 2/3 so 2/3 into x - x1 x - 0 that is 3y - 3 = 2x that implied 2x minus 3y plus 3 = 0. This is the required line passing through intersection of two lines and perpendicular to this line. Okay. So if we ask what is the equation of the line passing through intersection of two lines and parallel to this line, parallel means एक ऐसे कौन करियो given line slope ला जहाँ बो required line slope ला ताहन बो or you can or if we ask equals of the line passing through the point of intersection of these two lines and passing through another point so another point there pass करते means तमे प्रथमे point of intersection बाहर करियो आउट जो point देछि से पॉइंट बाहर करियो दीटा पॉइंट मिलला तो लाइन रो इक्वेशन बाहर करियो बाय हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म तो y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1 in this way you have to find the equation of the line given point of intersection of two line and passing through or perpendicular or parallel or you can apply also L1 plus KL2 a method भी apply करि पारियो okay next some question for yourself number 1 find the equation of line bisecting the line segment joining 3, -7 and 1, 5 at a right angle ना नहीं सो ये लाइन गोटे इक्वेशन बाहर करियो जो लाइनटा ए दुटा पॉइंट को जॉइन कला जो लाइन सेगमेंट आसला
ताको कौन करो बाइसेक्ट करो एट राइट एंगल रे तो बाइसेक्ट करो मीन्स आर मिड पॉइंटा बाहर करदेव ए लाइन रो मिड पॉइंटा ना कि ये जो रिक्वायर लाइनटा ए लाइन को कौन करो बाइसेक्ट करो आउ परपेंडिकुलर होतो मीन्स फास्ट ए पॉइंटा बाहर करदो मिड पॉइंटा ए लाइन देरी पास करियो आउ ए लाइन रो स्लोपटा जतिक हम परपेंडिकुलर राइट एंगल मीन्स ए लाइन टाक परपेंडिकुलर होची तार यार स्लोपटा जहाँ हम रिक्वायर लाइन स्लोपटा कौन हम गिवन लाइन स्लोप रेसिप्रोकाल अपोजिट साइन नहीं कि तो एमडा हूँ यार रेसिप्रोकाल अपोजिट साइन आउ आर मिड पॉइंट दे लाइन पास करियो सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन नंबर 2 राइट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन 3x plus y minus 2 equal to 0 you know how to convert the normal form constant term first right side नब राइट साइड टर्म नेला पर जदि से नेगेटिव होची माइनस टी मल्टीप्लाई करी पॉजिटिव करियो ना जदि पॉजिटिव होची किछि करिया दरकार नै कला पर पॉजिटिव जदि हे होची तो डिवाइड करियो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 3 रो स्क्वायर प्लस 1 तो रूट 10 सब थरे डिवाइड कर दो दैट इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 2 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन तेणु ए पॉइंट टू ए लाइन प्रति डिस्टेंस बाहर करियो जेंदे फिगरटा ड्रॉ करियो लाइनटा ना कि ए लाइनटा जेमती कि ये लाइन सहित कौन हो पैरेलल हो सो ए पॉइंटा फास्ट बाहर करियो ए पॉइंटा बाहर करिया बोले लाइनटा बाहर करियो ए लाइनटा जेहेतु आपको पैरेलल होची हेले ए लाइन रो स्लोप जहाँ हम ए लाइन रो स्लोप ताहा हम पॉइंटा दे देछि तेणु स्लो पॉइंट फॉर्म रे लाइन रो इक्वेशन बाहर करियो पॉइंटा बाहर करियो तापर डिस्टेंसटा बाहर करियो नेक्स्ट नंबर 3 4 है फाइंड द इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर करियो से पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करी लाइन इक्वेशन बाहर करियो नेक्स्ट 5 नंबर टा सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स y इक्वल टू m1x प्लस c1 y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड x इक्वल टू 0 तेणु गोटे ट्रायंगल एरिया बाहर करियो ट्रायंगल एरिया होची एटा a b c नबो से ट्रायंगल तीन साइड रो इक्वेशन दे देछि सपोज y इक्वल टू नंबर m1x प्लस c1 एटा होछि y इक्वल टू m2x प्लस c2 एटा होछि x इक्वल टू 0 हला तेणु फास्ट ए लाइन टाक सॉल्व करी ए पॉइंटा बाहर कर दबो ए लाइन टा सॉल्व करी ए पॉइंटा बाहर कर दबो ए तीटा लाइन रो इक्वेशन सॉल्व करी पॉइंटा बाहर कर दबो रेडी एक्स्ट्रा 0 अच्छी एक्स्ट्रा 0 ले एडी पकेले कोन y टा होछि c1 तो एटा होछि 0, c1 पॉइंट प्लेस ला b पॉइंट सिंधी एक्स्ट्रा 0 y टा केते होछि डी c2 हबो ए पॉइंटा बाहर कर दबो ए पॉइंटा कोन y इक्वल टू एति की y इक्वल टू तार तो कोन m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2 सो m1x माइनस m2x इक्वल टू c1 माइनस c2 एक्स्ट्रा पळाइबो y रे पके दबो y टा पळाइबो तो ए पॉइंटा बाहर कला परे यू कैन अप्लाई the triangle area method formula half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 तो ये फॉर्मूला यूज करी तुम ट्रायंगल एरिया बाहर कर दबो से ट्रायंगल एरिया टा या संगे सेम होबो ओके सो यूजिंग दिस concept you can do this problem and you are also in element exercise test book ro bi element book ro bi koriyo in next class we will do discuss how to find the perpendicular distance from a given point to the line and what is the position of a point with respect to a line. Thank you.